It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. So, very good morning to all my dear friends. So, just now you have seen the video on Unacademy, which is now exclusive even for engineering services. Okay. So, once again, good morning to all. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो जस्ट एक क्विक इंट्रोडक्शन. मैं हूं आप लोगों का दोस्त ऐश्वर्य. पढ़ाता हूं आपको गेट ईएससी के लिए. आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड बीटेक फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली. 4 times I have qualified GATE with my best AIR 226 and I do have 7 years of teaching experience and 2 years of industrial experience. Okay, so all these are the subjects which I am basically taking you for, you can say, at the various platform of Unacademy. Just a minute, my pen tab. Yes. All these are the subjects which I am basically taking for you guys at various different platform of Unacademy, like Unacademy special classes, Unacademy you can say plus, as well as on Unacademy official YouTube channel. And these subjects are theory of structure, RCC, geotechnical engineering, strength of material, and engineering mechanics. So this is a code which you can apply before buying any Unacademy plus subscription in order to avail 10% off. And this 10% is the maximum discount given by Unacademy. So do not think that this code is only valid in GATE and ESE since I am educator here. So this code is valid, you can say, for each and every competitive field. So you can consider this code to be universal code at Unacademy. आप इसको Unacademy पर universal code मान सकते हो. Is it clear? Okay. अब सवाल ये आता है कि why do we need plus? तो Unacademy plus पे you can get all these benefits. You will be having access to daily live classes, crash courses आपको हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं. वीकली टेस्ट यहाँ पे होते हैं. डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे होते हैं. इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में हमारे कोर्स अवेलेबल होते हैं और रैंक इम्प्रूवमेंट बैचेस भी हैं. ओके, बट अगर आप चाहते हो कि प्लस के एक्सपीरियंस को कन्वर्ट करना इनटू योर पर्सनलाइज्ड कोचिंग, तो आप हमारे आइकॉनिक प्लान को देख सकते हो, विच इज द सुपरसेट ऑफ प्लस. एंड इन दिस प्लान वी आर सिंपली गोइंग टू असाइन यू ए लोकल कोच, ए पर्सनल कोच, ऑल्सो नोन एज योर लोकल गार्जियन, who is going to plan your study, who is going to keep the study booster session for you, who is going to analyze your test at the personalized level, and who is also going to provide you the preparatory study material. Okay, so whether it is the matter of you can say plus or you can say iconic, so my code is hashtag readily available. It is readily available. Is it clear, guys? Okay, now after that some information on our upcoming batches. तो ये वो बैचेस हैं जो हमने लॉन्च किए हैं recently. So as you can see that on 22nd of Feb we have launched the 5th batch for GATE 2022. It is a 1-year program and you can see all the technical stuff will be taken care by our top educators. And if you want to be a part of this
batch, you can use the code as 10. A very good morning, Deshi Pandit. Okay. Okay. And if you can say, if you think that you need 2 year preparation time or you are in second year likes, then for you as well we have launched a batch, fifth batch, batch E. It started on 22nd of February. Okay, it started on 22nd of February, and here as well you can use the code as 10 for your 2 year subscription. Okay, and similar educators, same educators are going to lead this batch here as well. Is it clear to all my dear friends? Tell me. Okay. चलिए, तो एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं इंफॉर्मेटरी इन बैचेस के ऊपर. So I hope you have seen it. Okay, so you can plan your subscription. Okay, चलिए. Next, my dear friend, about engineering services. Engineering services के लिए we have launched a second batch, और इसमें हम लोग देखेंगे आप लोगों का जनरल स्टडीज. So it is target ESE Prelims batch for GATE 2021. Okay, for GATE 20 for ESE 2021. सिर्फ जनरल स्टडीज यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, and you can see that here as well our top educator is going to take care of your non-technical stuff. Okay, okay, it is your non-technical stuff. So you can also use the 10% discount by using my code. You can get the 10% discount by using my code as 10 here as well. Okay, तो इसको हमने 18 तारीख को चालू किया है. नेक्स्ट बैच हम मार्च में लेके आएंगे. ठीक है, चलो. तो ये थी some information about me, Unacademy, and its recently launched batch for GATE 2022, 2023 and ESE non-technical batch for 2021. Okay, और अगर नहीं किया है अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड, तो आप इसको जल्दी कीजिए. यू कैन डाउनलोड इट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम योर ऐप स्टोर और यू कैन से फ्रॉम प्ले स्टोर. ओके, और आफ्टर डाउनलोडिंग इट यू कैन यूज द इनवाइट कोड एस 10. ओके, प्रतीक जी, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का चैनल नहीं है. कंप्यूटर इंजीनियर का चैनल अलग है. अनअकैडमी सी एस गेट सी एस वो अलग है. ठीक है, हाँ. तो मैं बता रहा था कि अगर आप ये इनवाइट कोड यूज करते हो तो आपको ये सारे के सारे फीचर्स अनलॉक मिल जाएंगे. स्पेशल क्लास, क्विजेस, लाइव टेस्ट सीरीज एज वेल एज योर अनअकैडमी कॉम्बैट. ओके, योर अनअकैडमी कॉम्बैट. इज इट क्लियर गाइस? ठीक, चलिए. So welcome to the practice session on ILD. Okay, so recently I have completed the influence line diagram on you can say special classes. फ्री स्पेशल क्लासेस में मैंने ILD खत्म किया है, कल ही खत्म किया है. तो इसके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेशन रखवाना चाहता था कि so that we can practice more number of questions. और I thought कि YouTube पे स्टूडेंट्स ज़्यादा इसको देख के ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो पाए. Okay, so theory I have completed on a special class. You can watch my lectures there after following me. Okay, and now we will be doing some questions, some good questions on ILD. Is it clear? कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम ILD के. ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन को. Just give me a minute because some voice echo thing is there, so let me check that. Just give me a minute, my dear friend. Just give me a minute.
ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो वेलकम टू दी प्रैक्टिस सेशन ऑन ILD. देखो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं. इंट्रोडक्शन, you can say first principle, introduction, first principle. आफ्टर दैट उसके बाद क्या है, मुलर बेसला प्रिंसिपल टू ड्रॉ ILD. और उसके बाद वी हैव ऑल्सो have to cover, you can say, very important, effect of rolling load. ये तो कल रात को टॉपिक मैंने खत्म किया है. इफेक्ट ऑफ रोलिंग लोड ऑन सिंपली सपोर्टेड गर्डर. ओके, so this we are going to see today. So here is the first question. So my dear friend, whosoever is coming here, and if he or she is civil engineering student, then your responsibility is to participate well in this session, because without your participation section cannot be interactive. Okay, so here is the first question, my dear friend, on your screen. So total 12 questions are there, and we will be discussing each of them one by one. Okay, so this is quite easy problem. So just start a problem, you can say, just to give you a good start. So tell me, the ILD for redundant structure can be obtained by, किस तरीके से आप indeterminate structure का ILD ला सकते हो? That is the thing. See, last night only I have covered that whether it is a matter of determinate or ऐसा redundant मतलब क्या होता है? Redundant means indeterminate. It means indeterminate. Okay. So the ILD of indeterminate structure you can obtain out of this by this Muller-Besla principle. Okay, Cauchy-Granoff theorem we will be using for slope and deflection. Muller-Besla is energy principle, in which we are going to draw the ILD by removing the stress function, then applying the generalized displacement. Unit load is also for slope, deflection and all. So best match here is Muller-Besla principle. Whether it is a determinate structure or indeterminate structure, Muller-Besla principle is always give you a qualitative ILD. It is always going to give you a qualitative ILD. Is it clear? Okay. Second is, this is a good question. There is a beam which supports a distributive live load of 1.5 kilonewton per meter and a single concentrated load of 8 kilonewton. Okay, and dead load is 2 kilonewton, and you have to simply calculate the maximum value of positive bending moment at C. This is really a very good question. C पे समझ रहे हो ना क्या पूछा है कि C पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब होगा? C पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब होगा? ओके, फॉर व्हाट आर गोइंग टू बी द पोजीशंस ऑफ लोड एंड ऑल. लाइव लोड दे रखा है आपको 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर. ओके, सिंगल कंसंट्रेटेड लोड आपको दे रखा है 8 किलोन्यूटन, लाइक दैट. और डेड लोड आपको दे रखा है 2 किलोन्यूटन पर मीटर. सो व्हेन इट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम? इज इट क्लियर? चलिए जस्ट कैलकुलेट दिस. हिंट मैं आपको दे देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ड्रॉ द ILD for your point C. Okay, bending moment for point C, and with respect to that ILD you have to simply think that what all are the various positions of load, or what could be the various positions of load
which is going to produce the maximum value of bending moment. Is it clear? Okay, so that is the thing. So क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसको बनाता हूँ बड़ा करके. Let's say this is a beam and this is so I have also told you the various tricks to draw the ILD for overhang beam, simply supported overhang beam. ना बताया था मैंने आपको, जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने सिंपली सपोर्टेड बीम का ILD बनाना है, and after that you have to simply linearly extrapolate the things. Okay, you have to simply linearly extrapolate the thing. सपोज ये मेरे पास C पॉइंट है और मान लो इतना ही मेरे पास ILD है, इतना ही मेरे पास बीम है. सो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, आई एम गोइंग टू सिंपली ड्रॉ ILD corresponding to this. After that, what I will do, I am simply going to linearly extrapolate. Okay, and regarding the amplitude or ordinate, I know the formulations here. It is going to be how much? It is going to be, first of all, these and these are going to be same. This and this are going to be same. You can see if from this distance equivalency, for 2 meter this is the rise, and here for 2 meter this must be the fall, and because slope is same. Okay, so that is going to be there. And what is this value? What is this value? It is A, L minus A over L. So what is A? 2 into 2 over L 4. So it is 2 into 2 divided by total length is 4. So it is going to equal to 1. So this ordinate is 1. And this ordinate you can say is minus 1. Please check the data if it is correct or not. Yes. Is it okay? चलिए बढ़िया. अब इसके बाद आपको पोजीशन ऑफ लोड चेंज करना है एक एक करके. अब आपको पोजीशन ऑफ लोड देखना है कि कहाँ पे लोड होगा तो कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा. तो किस तरीके से करने वाले, देखो इधर. So you tell me when will be the positive maximum bending moment at C will occur for the 8 kilonewton load. For the 8 kilonewton load, I think the position of load must be such that it is going to create the maximum impact at C. And since the ordinate of ILD of bending moment at C is maximum under C only, so your load will come over here. So the position of load I would like to keep here, the position of point load I would like to keep here over C, or you can say on C. So here is 8 kilonewton load. Here is 8 kilonewton load. Okay. Okay, what is next? What is next? Next is regarding your UDL. So what is the position of live load? If there is a dead load, if there is a live load of 1.5 kilonewton per meter, then what should be the position of it? I have to create the maximum positive impact at C. So what I have to do here? So the position of load would be such that it is only going to cover positive area. It is only going to cover positive area. So the live load intensity is of 1.5 kilonewton per meter, and with respect to that it must lie like this. ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए. आशुतोष जी कह रहे हैं सर प्लीज क्लियर विच सेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वाज टफ.
आशुतोष जी आ रहे हैं, सारे बहुत सारे सेशंस हम लोगों ने दिए हैं इसके ऊपर. यू कैन चेक दैट. अब देखो सेशन 2 आई वुड लाइक टू से दैट वाज लेंथियर. वो थोड़ा सा लेंथी था, ये मैं बोलूँगा आपको, जो मेरा ओपिनियन है. हाँ तो कोई नहीं. So for position of live load, let's say live load is green. So this must be the coverage. So its intensity is how much? 1.5 kilonewton per meter. It is 1.5 kilonewton per meter. Okay. What is next? What is dead load? Okay, in dead load we cannot think of much. Why? Because dead load is present everywhere. It is the weight of the structure. So here we do not have any option to shift the dead loads, because it is uniformly distributed and it is going to act everywhere in the portion of the beam. So this is the dead load everywhere. So I would like to show it by black. Okay, this black, ये भी हो जाएगा. Okay, it is would be continuous. So this dead load has to be everywhere. What is the intensity here? 2 kilonewton per meter. क्या intensity होगी यहाँ पे? 2 kilonewton per meter होगी. ठीक है. Okay, my dear friend, please share the session. Okay, चलिए. अब आप मुझे आंसर बताइए क्या होगा इसका. Now you can tell me its answer. So you want to create the maximum positive bending moment at C. So bending moment at C is equal to how much? 8 into 1. It is due to the movement of live load, concentrated load, live load only, plus whenever it comes to UDL, we have to see the coverage of area. So intensity of this live load is 1.5 and the area which it is going to cover is this much. Okay, so it is going to cover equivalent to area of this triangle, which is half into base into height. Okay, and when it comes to dead load, it is going to cover the entire span. We'll see. अब देखिएगा कलर कोडिंग मैच कर रहा हूँ. So calculate this and let me know if you guys are having any doubt.
Great if you do not have any doubt. चलिए. So Jaya Rajneesh, I think it is coming out to be option number B. So I would like to go with option number B. Okay. देखो कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे यार. मैंने यहाँ पे 8 किलो न्यूटन को मैक्सिमाइज करने के लिए ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू 8 वुड बी मैक्सिमम व्हेन इट विल बी ओवर C. ओके, बेंडिंग मोमेंट वुड बी मैक्सिमम at C when due to UDL when this green UDL is there. And dead load we do not have any option. भाई dead load तो हर जगह आएगा. Dead load थोड़ी ना आपकी मर्जी के हिसाब से चलेगा कि यहाँ मैक्सिमम यहाँ मिनिमम. नो, dead load is the weight of the structure. वो हर एक लोकेशन पे मौजूद होगा. Is it clear? चलिए, so option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, चलो आगे देखते हैं. So here is question number 3 for you guys. So there is two wheel loads 80 and 2 wheel loads 80 kilonewton. Just hang on guys, just hang on. I think some data is missing. Two wheel loads, only one is given. Give me a minute. Okay, sorry guys. Yeah, so I have confirmed the data. It is 200. It is 200 kilonewton. क्योंकि दो लोड दे रखे हैं ना, 2 wheel loads 200 kilonewton and 80 kilonewton. Okay, 200 kilonewton and 80 kilonewton respectively, spaced 2 meter apart, and they are moving on a girder of span 16 meter. Any wheel load can lead to the other. ठीक है, कोई पोजीशन नहीं दे रखी, या तो 80 भी आगे हो सकता है, 200 भी आगे हो सकता है. आपको बताना है मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स एट ए सेक्शन 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. ओके, तो सिंपली सपोर्टेड गर्डर का केस है.
और 4 मीटर बाद लेफ्ट से क्या नेगेटिव शेयर होगा, दिस यू हैव टू टेल. ओके, या नाउ यू कैन अटेम्प्ट इट. इट इज अ गुड क्वेश्चन. Okay, and regarding just wait, Arjun. Hmm. 60 बता रहे हो, 60. अच्छा, और आपको ये कैसे पता चला, क्या कहते हैं, बीम? जस्ट ए मिनट. इस क्वेश्चन में काफी टाइम लग गया बताने में. सो इट इज गोइंग टू बी, आई एम लुकिंग इट. ओके, 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 ठीक है अर्जुन, गुड, गुड. चलिए, गुड, गुड अर्जुन, सही आंसर है आपका. सो दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड गर्डर ऑफ स्पैन 16 मीटर. ये हो गया मेरे पास एक सपोर्ट. Okay, and out of this 16, this is 4 and this is 12. सही बोल रहे हो आप एकदम अर्जुन, क्योंकि देखो आपको क्या बोला है, लेफ्ट से 4 मीटर, तो 16 4 ही हो गया, तो बचा कितना, 12. सो दिस इज पॉइंट नंबर सी, और यू कैन से सिंपली द सेक्शन अंडर कंसिडरेशन. सो इफ आई एम गोइंग टू draw the shear force diagram, sorry, ILD for shear force at C, not shear force diagram, ILD for shear force at D. So maybe by using first principle or Murabbi's law, but at least we all know how to tackle simply supported beam. See, it is going to be like this. यहां तक जाएगा नीचे और इसके बाद जाएगा ऊपर. Okay, it is going to be like this. और इसको आप लिख सकते हैं 0. Tell me these coordinates. It is a by L, so it is negative. What is a by L? A by L is 4 by 16. L is 16. So it is 1 by 4. It is 3 by 4. ठीक है, 1 by 4 3 by 4 आ गया. अब अपना दिमाग लगाना चालू कर दो. यहां तक तो पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन है और आपको shear force पूछा है, मैक्सिमम नेगेटिव कब होगा. सो यू हैव ड्रॉन द ILD फॉर shear force at C. नाउ दो लोड आ रहे हैं मेरे पास, ध्यान दीजिएगा. कौन कौन से? 80 एंड 200 किलो न्यूटन. ओके, देयर आर टू लोड्स 80 एंड 200 यू कैन से किलो न्यूटन. अब इसको कौन सी पोजीशन पे रखोगे सो दैट यू विल बी गेटिंग योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू कैन से नेगेटिव शेयर. तो ऑब्वियसली बात है, इफ यू वांट टू सिंपली मैग्नीफाई द नेगेटिव शेयर, in that case your load must be lying somewhere here, left hand side, not right hand side, because the moment you are going to cross this point, C point,
then positive amplitude is going to nullify negative thing. Okay, so simply we have to maximize this portion, okay, under the point load. So when this ordinate would be highest, just when the load is just left of C, and out of 80 kilonewton and 200 kilonewton, because in question they are saying you are having full freedom, that it is not a freedom, it is a foundation, that they have not fixed the position of load. They are saying either 80 kilonewton can lead or 200 kilonewton can also lead. So if such is the case, and with respect to that scenario I have to see the maximum shear force, then I would like to go 2 kilonewton to lead. Why 2 kilonewton to lead? 200 kilonewton to lead, because it is greater than 80. So it will be coming over here. इसको बना देता हूं मैं ग्रीन से. Okay, this is 200, और in that case और कोई पोजीशन तो नहीं ध्यान में आ रही है आपके? It is कितना? 80. Okay, so with respect to this, what is going to happen? It is going to minus 1 by 4 into 200. Okay, minus ये 1 by 4 का आधा कितना हो जाएगा? 1 by 8 minus 1 by 8 of 80. तो 200 बटे 4 हो गया 50, 80 बटे 8 हो गया 10. So total it is coming out to be 60. So yes, very good Arjun. 60 is the right answer. 60 is going to be the right answer. Okay, चलो, कोई डाउट, कोई डिस्कशन? Okay, next question. What is the area of ILD for the reaction at hinge end of a uniform probed cantilever beam of span L? Yeah, this is also interesting. देखो, इसको करने के दो तरीके हैं. एक तो लगेगा वाकई में टाइम, because you have to calculate the exact ordinate of probed cantilever reaction. Then you have to take the area under the curve with the help of integration. Okay, I will tell you that procedure. And one more you can say way is there to do the thing. ठीक है, तो पहले मैं इसको अगर बनाना चाहूं तो इट विल बी गोइंग लाइक दैट. दिस इज a probed cantilever beam. This is a probed cantilever beam. This is a probed cantilever beam. दिस इज नोन एज दी प्रोब्ड रिएक्शन. इसको बोलोगे आप लोग क्या? प्रोब्ड रिएक्शन. ठीक है, इसके लिए आईएलडी बनाना है. देखो, आईएलडी तो तुरंत बना दोगे. कैसे बना दोगे आईएलडी? मुलर ब्रिस्ला प्रिंसिपल. क्या जिसका आईएलडी बनाना है उसको सिस्टम से हटाना है, फिर उसी स्ट्रेस फंक्शन की दिशा में एक यूनिट जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट लगाना है, एंड व्हाट एवर इज द डिफ्लेक्टेड पैटर्न ऑफ द यू कैन से इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन यूनिट लोड, वन यूनिट डिस्प्लेसमेंट, that is going to be the ILD. So here if we are going to draw the like that, so it is just like to be a cantilever deflection thing. So it will be
Okay, like this. It is going to be like this. Okay. And now this RB exact coordinate is how much? For this, what you can do? For this, what you can do? This is RB. So you know that RB L cube upon 3EI is equal to, if there is a unit load, then it is x cube by 3EI. What I am doing, I am applying the force method. I am removing RB. Due to RB, the deflected shape of B would be here, x cube by 3EI plus x square by 2EI into L minus x, and by this RB you can give, it is x by L whole cube plus x square by 2 by 3 L cube into L minus x. ओके 3 ऊपर आएगा. ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट आरबी पता चल गया. अब आपको ये एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सिंपली यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, लेट्स से एफ एक्स into this is y, this is y, this is dx, and limit of integration would be 0 to L. So if you are going to do that, you will be getting 3L by 8. You will be getting 3L by 8. Is it clear to all my dear friend? And yes, Arjun, you are right. Yes, what you can do, this is also I was about to tell you. We know that in होशियार हो गए हो. We know what is RB for in case of fully UDL. तो RB कितना निकालते हो आप लोग? It is 3WL by 8. It is 3WL by 8, है ना? So RB is the reaction at B when the entire UDL is covered with this. So RB can also be obtained if we know the ILD, because RB is equal to ILD, area under the load. So if load is W, then what is area? It is going to be equal to 3L by 8. So like that as well you can calculate 3L by 8. Is it clear? चलो ठीक है, बढ़िया. चलिए नेक्स्ट, कोई डाउट तो पूछिए. हाँ, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द लेफ्ट क्वार्टर पॉइंट ऑफ सिंपल बीम क्रॉसिंग द यूडीएल ऑफ लेंथ शॉर्टर देन द स्पैन in the direction left to right is, in the direction left to right is, would occur after the load had just crossed the section by. अच्छा है, ध्यान से आंसर देना है इसका. Try to answer it smartly. So maximum bending moment at the left quarter of the simple beam. ठीक है, ये मेरे पास बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम. ओके, मान लीजिए एक ए और एक बी है, तो इसका 1/4 उठा लो यहां से. Let's say the section under consideration is C. If it is 1/4, it is 3/4. Okay. So if the UDL is shorter than the span, if the UDL is shorter than the span, then what is going to happen? It may take any point.
and we know in order to produce the maximum value of bending moment, my section should divide the UDL in the same ratio as it divides the span. Okay, it divides the UDL in the same ratio as it divides the span. Okay. So this is the thing. Anyhow, you have to maximize this area. So Abhishek would like to go with C. Okay. Let's see. So क्या होगा मैक्सिमम की कंडीशन? क्या होगा मैक्सिमम का कंडीशन? This is going to be like this. Yeah, this is going to be like this. Okay. So ये जो सेक्शन है ये इसको भी उसी रेशियो पे काटेगा जिस रेशियो पे ये बीम को काट रहा है. तो इसका रेशियो भी क्या होना चाहिए? 1/4 and 3/4. Its ratio must also be equal to 1/4 and 3/4. Now what they are asking, it would occur after the load has crossed the section by, कितना लोड ने क्रॉस किया सेक्शन सी को? It has crossed 3/4. Out of this L dash 3/4, 75% of the section has been crossed C. So this is the condition which will be producing the maximum value of bending moment at C due to, in this case, where UDL is shorter than the span. Okay. So it is the really very important application. So option C, very good, Abhishek. अर्जुन सब पीछे रह गए आप, क्या बात है? Okay. Just so मोहम्मद ताहिर खलील, थोड़ा लेट हो गए आप. So you also attended the session on ILD, ना? Okay, good. Good. So question number 6. Question number 6. A UDL of length 8 meter crosses a simply supported girder of span 20 meter. The maximum bending moment at the left quarter span point occurs when the distance between the CG of the total load and mid span is. This is also good. This is also a good question, my dear friend. Concept is similar, but the way of asking question is different. तो एक बना देते हैं हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम 20 मीटर का बना दीजिए. So 8 meter crosses a simply supported girder. 8 meter, 12 मीटर, रेशियो हो जाएगा 4:3 का, 4:3. ओके. द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द लेफ्ट क्वार्टर. ओके.
नहीं सॉरी, मैं क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया। यूडीएल का लेंथ आपको दे रखा है 8 मीटर, यूडीएल लेंथ इज 8 मीटर एंड बीम लेंथ इज 20 मीटर। अच्छा ठीक है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट लेफ्ट क्वार्टर ऑफ द सेक्शन। अब अगर बीम आपका 20 मीटर का है तो इसका मतलब ये है कि क्वार्टर कितना हो गया, 5 15 आउट ऑफ दिस 20। ये लेफ्ट हैंड सेक्शन ले लीजिए 5। सो अभिषेक जी 3 मीटर के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, दिस इज सेक्शन and you know the condition of maximum bending moment in case of UDL shorter than the span. So it occurs when section C is going to divide the UDL in the same ratio as it divide the span. अर्जुन जी C के साथ जाना चाह रहे हैं। Okay, so it is going to be like this. Out of 8 1 quarter is how much? 8 by 4 2. So 2 will come this side and 6 will come this side. Okay, that is the case. So with respect to section C, the right hand shift is 6 and left hand portion is 2 meter. पूछ क्या रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। आपसे पूछा है when the distance between the CG of the total load and mid span, this is important, this is my mid span, let's say ये हो गया मेरे पास, मिड स्पैन, यहाँ पे आएगा मिड स्पैन मेरा। कैसे लोकेट किया मैंने, आपको पता है 20 का आधा कितना होता है, 10। दिस इज 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10। ओके, दिस इज 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10। ठीक है, नहीं लग रहा तो उसको थोड़ा सा बना लो, बट दैट इज अ फैक्ट। नाउ व्हाट इज द सीजी ऑफ द लोड? 8 मीटर का अगर ये यूडीएल है तो उसका सीजी का होगा 4 मीटर पे। भाई ये जो ब्लैक से मैंने बताया है ये सेंटर है, ये यहां से इसकी दूरी कितना निकल के आया, फ्रॉम हेयर इट इज लाइक दिस। दिस इज सीजी, दिस इज योर सीजी। नाउ व्हाट अबाउट दिस सीजी? दिस इज 4 फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पे कितना हुआ, ये इस साइड 2 है तो ये 5 है, ये 7 है। 7 में से अगर 4 इधर चला गया तो यहाँ से कितना बचा, 3। ओके, तो यहाँ से कितना बचा आपका, 3। सो दिस CG वुड बी समवेयर हेयर एंड इट वुड बी 3 ओनली। यही तो पूछा है, आई होप यू गॉट इट। भाई ये 2 मीटर है तो 2 मीटर इधर होगा CG, क्योंकि 8 में से आधा CG होगा 4 मीटर पे। तो अगर यहाँ से यहाँ 4 है तो यहाँ से यहाँ भी 4 होगा, बट सेंटर पे जब 2 मीटर इधर था और 6 मीटर इधर था तो सेंटर के बाद, सॉरी सेक्शन C के बाद सेंटर कितना दूर था? सेक्शन C के बाद सेंटर जो था, सेंटर इज एट 10 मीटर एंड सेक्शन C इज एट 5 मीटर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5। और ये कहाँ तक जा रहा है, 6, एक आगे तक। तो 6 से 4 पीछे जाओगे तो सेंटर से कितना पीछे आना पड़ेगा, 3 मीटर। So that is why I am keeping here 3 meter. Okay. So ultimately you have to find the distance between the CG of this UDL, which is this green line, and center of the span, which is this black line. Is it clear to all my dear friends? Please let me know. Yeah, 3 meter is right. 3 meter is absolutely right. Okay. Next is the absolute maximum bending moment that a simply supported girder of 10 meter experiences when two concentrated load of 20 and 30 kilonewton spaced 2 meter apart, okay, crosses the girder from left to right. This is interesting, and here it is given to you guys 30 kilonewton load is leading. 30 kilonewton load is leading. So what you have to do? Maybe I am hiding some options so you can see here. So the absolute maximum bending moment करना है इसको। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं, but I want you guys to solve it. The total span is of 10 meter. The total span is of 10 meter.
The total span is of 10 meter. The total length is given and position of loads are given to you. "30 kilonewton is going to lead. 30 kilonewton is going to lead. And my dear friend, last night only I have told you how to calculate. Last night only I have told you how to calculate the maximum absolute bending moment. Absolute maximum bending moment. Okay. For this, the center of the system is going to be key. The center of the system is going to be key. But yes, it will not occur at center. It will not occur at center, but it will be occurring when the center of the span is midway of CG of the load system and load under the consideration. So luckily here only two loads are there. So in this case you will never going to encounter the two load cases, because even if one is enough, because even if one is let's say 20, another is say 30 or whatever. So in case of two load system, CG will always be coming nearer to the heavier load. It will always be nearer to the heavier load. Okay, so it cannot be an issue in two load system. But yes, whenever there are multiple loadings, then chances are there you may have to encounter the two load cases. Okay, but in this case, no need. So here I am having one more question for you guys, where there are two load cases. So this is 30 and kilonewton and 20 kilonewton. So 30 is leading. So if I am going to calculate the CG of 30 and 20, so where it is to be, the distance between them, if it is 2 meter, तो CG कितना आएगा दोस्तों? What is going to be the CG? What is going to be the CG? It is 20, it is 30. 20, 30. तो कितना बनता है ये? 60/50, 1.2 बोले तो 0.8 from 30. It is going to be here. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां से हो गया 0.8, ये यहां से कितना हो जाएगा 0.8, तो इधर से कितना बचा ये 1.2, इधर कितना हो जाएगा 1.2। ये आपका है सेंटर, ये आपका सेंटर है। हैवियर लोड आउट ऑफ 20 एंड 30 इज हाउ मच? ओके अभिषेक, नोटेड। ये आपका होगा सेंटर, इधर आएगा। फॉर गेटिंग द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हियर योर सेंटर शुड बी। तो भाई ये सीजी का, ये लोड का जो सेंटर है उसको मैंने ग्रीन से दिखाया है, बीम का सेंटर मैं रेड से दिखा रहा हूँ, या और लेट मी चूज एनी अदर कलर बिकॉज लोड आई एम आल्सो शोइंग विद रेड। सो लेट्स से द सेंटर ऑफ द बीम आई एम डिस्प्लेइंग विद ब्लू and this is the CG of the load system, this is green, this is the CG of the load system, and the considered load is 30, this I am showing with the red. Okay, this is 30 and this is 20. Okay, this is 30, this is 20. Okay Arjun, good. Yes, congratulations, D is right answer. 30 और ये कितना हो जाएगा 20। तो यार अब आप जब ILD बनाओगे तो 30 के नीचे आप इसका ILD बनाओगे। C तक बातचीत थी कितने की 5 मीटर की, अब ये सेंटर से 30 तक का डिस्टेंस 0.8 अभी आपने निकाला, तो सेंटर के आगे अगर ये टोटल 0.8 है दोस्तों, if it is total 0.8, then out of this 0.8 center would be 0.4 from either side. So ये वाला जो 30 किलोमीटर का लोड है, it would be how much? It would be you can say 10 का आधा कितना हो गया 5,
10 का आधा कितना हो गया 5। 10 मीटर दे रखा है ना आपको, तो 10 का आधा हो जाएगा 5। 5 प्लस 0.4, 0.4 तो कितना डिस्टेंस हो गया ये? आई वॉन्ट टू राइट दिस डिस्टेंस टिल 20। यस अर्जुन, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अर्जुन आपने दिया था इस बार गेट? So this is 5.4. This is equal to 5.4 into 4.6 by 10 multiplied by, this is the ordinate, multiplied by 30. So maximum bending moment is 30 into ordinate under 30. It is 5.4 into 4.6 by 10. So how much it is? I think it is coming out to be the option. Okay. क्लियर है? इस तरीके से हो जाएगा ना। क्लियर है? ठीक है। सो बट एक चीज ध्यान रखना, ये तो मैंने सिर्फ 30 का कारण इम्पैक्ट निकाला है, आपको इस 20 के कारण भी ये इम्पैक्ट जोड़ना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर ना। सो ये बताइए कितना आएगा, वैल्यू बता दीजिए एक बार।
चलिए ठीक है, तो दिस इज 105.8 है ना, सिर्फ इसके कारण नहीं, इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना. सो विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यू आर गेटिंग दिस. सो दिस आई हैव कैलकुलेटेड, इट इज 1.564. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू माय डियर फ्रेंड्स. सो नेक्स्ट इज question number 8. So the beam supports a distributive live load of 2 kilonewton per meter and a single concentrated load of 6 kilonewton. The dead load of the beam is 4 kilonewton per meter. You have to determine the vertical positive reaction at C. Please calculate it. Okay. So concept is quite similar, which we have seen in earlier question, but this time I need a perfect answer from you guys. Tell me. चलिए बताइए, मैं आपका कंसंट्रेशन खराब नहीं करूंगा. ओके. देखो कुछ नहीं करना आपको, पहले तो क्या करो आप लोग, सी पोजीशन पे आप रिएक्शन निकाल लीजिए. सी पोजीशन पे आप वर्टिकल पॉजिटिव रिएक्शन के लिए आईएलडी बना लीजिए. तो इसको क्या करोगे आप, इस पे आप यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगाओगे, आरसी हटा के जो भी डिफ्लेक्टेड पैटर्न आपको मिलने वाला है उस डिफ्लेक्टेड पैटर्न के हिसाब से यू सिंपली हैव टू एडजस्ट दिस लोड such that it can produce the maximum value of shear force, or you have to simply amplify the area. और जब बात आएगी हमारी डेड लोड की, और तो हमें पूरे का पूरा बीम कवर करना होगा. इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट. सो नाउ यू कैन कैलकुलेट, जस्ट ए मिनट. Yeah, solve it. Is it clear? Is it clear to all? कोई आंसर? ठीक है, चलिए भाई आरसी के लिए बना दो ना, पहले बना दीजिए आरसी के लिए आईएलडी. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रिएक्शन एट सी निकालना है. सो रिमूव आरसी. सो दिस इज गोइंग टू बी योर टेम्पररी स्ट्रक्चर. This is going to be your temporary structure. Okay. And over this temporary structure, आपको यहाँ पे ना एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करना है. एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड करना है. ओके, तो ये जाएगा डिफ्लेक्ट होकर किस तरीके से, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. लीनियर बनेगा डायग्राम.
and this ordinate would be 1 here, और एक्स्ट्रापोलेशन से आपको पता चलेगा कि दिस इज 2, 3 के लिए 1 तो 6 के लिए 2 यार, क्या एक्स्ट्रापोलेशन। और यहाँ पे आ जाइए, अब इनको मैक्सिमाइज करना है आपको, सी पे रिएक्शन चाहिए मैक्सिमम। अच्छा, कंसंट्रेटेड लोड को कहाँ फिट करोगे? सी पे मैक्सिमम वैल्यूज, ये देखो, ईच एंड एवरी ऑर्डिनेट इज व्हाट, इट इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ shear फोर्स और रिएक्शन एट सी। सो यार एट यहाँ पे देखिए आप लोग कि अगर 6 किलो न्यूटन को आपने यहाँ रखना है, इधर धरना पड़ेगा इसको, दिस इज 6 किलो न्यूटन, ओके। अच्छा, लाइव लोड, लाइव लोड को क्या करो, पूरे में कवर करवा दो, पूरे में लाइव लोड कवर करवा दो, बट ये ऑर्डिनेट 0 होगा, so it is going to be here as well. Even dead load also going to come here, आएगा सब में। see, live load and dead load would be there, okay, so नेगेटिव तो जा नहीं रहा, तो ये लाइव लोड भी हो गया, यही डेड लोड भी हो गया, और ये और बोल सकते हो कि लाइव लोड वैसे इसमें लगा दो, बट डजंट मैटर, यहाँ के पहले वाले ऑर्डिनेट 0 है, सो अल्टीमेटली यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ दिस, ultimately you have to add both of this, and what are they, 2 and 4, the total are 6. So due to 6 kilonewton I am going to calculate क्या बात है, किसी ने आंसर नहीं निकाला इसका अभी तक। 6 into 2 is due to live load plus 2 के कारण है half into base into height plus अभिषेक जी 42 आ रहा है क्या, प्लस 4 के कारण है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो पहला वाला आ रहा है 12, दूसरा वाला आ रहा है ये भी 12, ये आ रहा है 24, 24 24 48, ऑप्शन डी आ तो रहा है एग्जैक्ट। अभिषेक, अभिषेक चेक कीजिए, एग्जैक्ट मैच हो रहा है ऑप्शन। अरे नहीं यार, चेक इट, चेक इट, 48 इज कमिंग एग्जैक्ट, नॉट 42, ठीक है। इज इट क्लियर? डी, यस, डी इज द राइट ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट इज, ओके, 9th क्वेश्चन गाइस, 9th क्वेश्चन, consider the beam ABCD shown in the figure, okay, for a moving concentrated load of 80 kilonewton on the beam, the magnitude of maximum bending moment obtained at the support C will be equal to what? ये आपको बताना है, ओके। मैं अपने आप को हाइड कर देता हूं, चलिए। सो निकालना है यहाँ पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो ये बीम आपको गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट एट सी के लिए आपको आईएलटी बना देना है, फिर देखना है कि ऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ मैक्सिमम हो सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए मजेदार क्वेश्चन है, करिए। गेट प्रीवियस ईयर इज दिस।
ओके, सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है अभिषेक जी ने। चलिए देखते हैं कैसे। देखो, इसका आईएलडी बना दो, इसको मैं अलग से अलग पेज पे बनाता हूं। ठीक है, आईएलडी मुझे बनाना है किसका? बेंडिंग मोमेंट एट सी। सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय टेम्पररी स्ट्रक्चर? इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। It is going to be like this. This is the internal hinge because I have to release the moment at C. Ordinate is 3 meter because this length of arc, theta is equal to length of arc upon radius. Ordinate is 3 meter. So now, dear friend, what is going to be the, you can say, 80 kilonewton concentrated load when the maximum bending moment will occur? When it is simply over B, because we can see this bending moment is maximum for this maximum ordinate. तो मेरा जो 80 किलो न्यूटन आएगा दोस्तों, that is going to come over C, B. So 80 kilo Newton multiplied by this ordinate, it is going to be 3. It is going to be 3. So it is 240 kilo Newton meter. It is going to be equal to 240 kilo Newton meter. So very well attempted. Option C is going to be the right one. Okay, option C is the right one. Is it clear? Okay. So good, Abhishek. Where are others? Where are others? So next question. Question number 10. Okay. This is the point C, and you have to calculate the value of RC when a 100 kilonewton load is acting at B. When 100 kilonewton load is acting at B. So पहले ना मैं क्या करता हूँ, RC के लिए ILD बना लेता हूँ.
Tell me if you are satisfied with this line diagram. It is going to be 1. It is going to be 1. It is going to be how much? If it is 1 for 6, it is going to be 1.5. This will be 1.5. Okay, if this is 1.5, then tell me where is that 100 kilonewton load. This is the ILD. This is the ILD. So 100 kilonewton load is acting at B. 100 kilonewton load is acting at B, means at this location. So now the shear force at C would be how much? It is equal to shear force, or you can say simply RC is equal to, this is ILD for RC, this is ILD for RC. It is equal to 100 position is there. Here it is 100 kilonewton load. So it is 100 into, so it is going to be 150 kilonewton. Yes, option D is the right answer. Option D is the right answer. एक और option देख लीजिए, मैं अपने आप को हटा देता हूँ यहाँ से. Option D is going to be the right answer. Okay, so that is the thing. That is the thing. Okay, so next question, our second last question of the session. ठीक है, चलिए ये बताइए. A live load of 20 kilonewton per meter, 6 meter long, moves on a simply supported girder AB of 12 meter long. For getting the maximum bending moment to occur at 4 meter from left and A, where is the head of load B as measured from A? ऐसे दो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको. नाउ इट्स अ थर्ड वन. सो लेट्स सी क्या आपका ओपिनियन है इसमें. ओके, सो कितना आंसर आया अभिषेक जी? 8 मीटर बोल रहे हो. चलो देखते हैं. 6 मीटर लॉन्ग, ए लाइव लोड ऑफ 20 kilonewton per meter, 6 मीटर लॉन्ग, मूव्स ऑन ए गर्डर ऑफ 12. ठीक है भाई, बना दो. तीसरा क्वेश्चन है ये इस कंसेप्ट पे. टोटल जो आपका बीम है ए बी, ये आपका 12 मीटर लॉन्ग दे रखा है. 4 मीटर यहां से आ जाओ आगे, ये हो गया 4. इफ दिस इज 4, दिस इज 8. ओके, सो दिस इज योर सेक्शन सी. सो फॉर 6 मीटर लॉन्ग, सो फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन सी, वेयर इज द हेड ऑफ लोड मेजर फ्रॉम ए. ए का हेड बताना है. तो देखो ये कौन से रेशियो में, 1:2. अगर मुझे 6 को भी 1:2 के रेशियो में डालना है तो क्या करूंगा, 2 4 से डिवाइड कर दूंगा. 2:4.
So if this is my UDL, then here it is going to be 2 and here it is going to be 4. So पूछ रहा है A से UDL का हेड कहाँ पे है? भाई यहां से यहां आपका 4 है, यहां से यहां आपका 4 है और यहां से यहां आपका भी 4 है. So this is 4 meter plus 4 meter. It is not scaled actually. So total it is head is 8 meter from A. So very well done. Okay. So now the final question. अगर ये आप कर ले जाते हो ठीक, तो इसका मतलब है आपको आ जाता है ILD. रोलिंग लोड के अच्छे कंसेप्ट आप लोगों के पास है. There are 5 point loads 10, 12, 12, 16 and 20, and 20 is leading actually, and they are spaced 5 meters center to center, and they are rolling over a simply supported girder of span 80 meter. Okay, so we have to calculate the maximum bending moment. You have to calculate the maximum bending moment, okay, that can occur anywhere. ये कर ले जाओगे तो समझ लो अच्छे कंसेप्ट हो गए आपके रोलिंग लोड पे. ऑप्शन ए 1180, ऑप्शन बी 1187, ऑप्शन सी 1193, 1193 किलो न्यूटन मीटर, ऑप्शन डी 1200. ओके, सो यू हैव टू टेल दिस. ओके, so this you have to calculate. Okay, this you have to calculate. Is it clear? So how you are going to do this? There would be two load cases. So it is going to be like this. So let me draw a simply supported beam. Total span is 80 meter. This is AB. And total it is 80 meter. So let's say if it is C, this is 40 and 40. Okay, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा. After this what we have to do? There are 5 point loads. So let me write these point loads, draw these point loads. 20 is leading, in the meantime calculate the CG of the load system. Calculate the CG of the load system. CG I am going to show with the green. So कितना होगा जरा बताइए. स्पेसिंग है 5 मीटर एवरीवेयर.
So what is this? Tell me the CG of the load system. What is this? So 11.14 आ रहा है मेरा, तो 11.14, okay, 142, or you can say 11.142 from 20. So ये 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 10 ये हो गया, तो 10 11.1. So it is coming out to be this. Please confirm if it is right or not. Please confirm. So this is the CG of the load system. This is going to be the CG of the load system. Okay, this is the CG of the load system. I am going to show it by green. Okay, so that is the thing. Is it clear? So remove it. 11.142, 11.142. Now see, there are two loads. There are two loads. This is a 20 na. Okay. Okay, this is 20. Okay, this is 10. यार एक दोबारा कैलकुलेट करना है यार, दोबारा कैलकुलेट कीजिए, दोबारा कैलकुलेट कीजिए एक बार. मैंने इसको 20 ले लिया शायद. ओके, तो 20 लीडिंग है, फिर 16 है, फिर 12 है. नो डियर, वी हैव टू कैलकुलेट इट अगेन. 20 is leading, it is 16, sorry guys, it is 12, it is 12, and it is 10. Okay, now you have to calculate it again. So I have done a mistake. दोबारा कैलकुलेट कीजिए इसको, मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट है, जस्ट. Now it is all right. 11.714. ना मैंने डबल चेक कर लिया. 11.714 somewhere here, and this is 5. So this is you can say it is 1.714, and it is 3 point something. So you can see here, this is 12 and this is 16.
CG is nearest to 12, but the next nearer load is 16. CG is nearest to 12, but the next nearer load is 16. So this is going to be a dual case, my dear friends. It is going to be a dual case. Is it clear or not? It is going to be a dual case. Okay. So I have to solve both of these cases one by one. I have to solve both of these cases one by one. So it is CG, I am calling it G, center of gravity. So first scenario, anyway we have to solve both of these conditions now. We don't have any option, because if CG would have been nearer to 16, in that case you can say you would be able to give answer only in one turn. But now the CG is going to be depend upon these two things. Okay, so अब क्या करेंगे? So case number 1 I want to draw now. Case number 1 I want to draw. So first is case number 1. If this is case number 1, I am drawing here. And what is the, like, if this is 40, this is also 40, then what is the position of load? It is such that the center of the span is the midway of CG of the load system and load under consideration. So what is the CG of the load system? It is here. So let me draw it like this. Let me draw this like this. Okay, so it is going to be like this. ओके, सो ये हो गया मेरे पास G, और इसको मैं लगाने वाला हूँ इस तरीके से. दिस इज समवेयर हियर. CG देखो किस तरीके से मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ. ये CG जो है देखो ये ऐसे आएगा लोड. इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. इट विल एंटर फ्रॉम A, it will be rolling down, it will be rolling down, it will be rolling down. And the condition for maximum bending moment will occur when the center of the span is exactly midway between CG of the load system and load under consideration. CG of the load system and load under consideration, like for this scenario. Here it is the midpoint. Here this CG is going to be the midpoint. Am I clear or not? Tell me. Am I clear? So let me draw a very thin line here for center of gravity and a thin line here. So this black one is CG thing. Okay, this red one is load under consideration thing. Okay, and this green one is center of gravity thing. It has to be midway. It has to be midway. Okay, so it is going slightly ahead. Now it is okay. 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 So this time the maximum is going to occur below the load under consideration, and right now the load under consideration is this. Right now the load under consideration is this. Okay, so I have to draw the bending moment. अभिषेक जी कह रहे हैं सर 1180 पे ताला लगा दीजिए. Okay, so noted your answer, but देखते हैं क्या आंसर आएगा. So it is going to be, now I have to draw the ILD. So ILD is going to be like this. ILD is going to be like this. So ये अगर ऐसा है तो ये कैसा होगा. And after that this is 12. तो 12 तक जो ILD है वो उठेगा. ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, and ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से. Okay, so tell me what is this height. First of all tell me what is the distance till 12. अगर मैं आपसे दूरी पूछूंगा up to this 12, then you should say it is
it is how much? You know, it is not 40 and 40. It is slightly lesser than 40. It is slightly lesser than 40 because this distance is 1.714. Half of 1.714 is how much? What is half of 1.714? Okay, it is going to be just a minute. Half of this is 1.714 divided by 2, 0.857. So this half distance is 0.857 and subtract 0.857 from 40. So it is 39.143. This is 39.143. And what about this remaining length? So in that case, this remaining length would be 40 plus or you can say simply it is going to be equal to 80 minus this. So 80 minus 39.143 is how much? 80 minus 39.143 is how much? It is 40.857. If it is 40.857, then how much is this altitude? This ordinate is how much? This you have to calculate. This is going to be how much? Tell me. It is going to be equal to 39.143 multiplied by 40.857. Okay, divided by how much? 80. A into L minus A upon L. So it is 19.99. It is 19.99. How much it is? 19.99. So if it is 19.99, थोड़ा छोटा लिखूंगा इसको. ओके, अब ध्यान से चीजें सुनते जाना. You can calculate this height from the similar triangle. You can calculate these heights. Give me the value of these one by one. Tell me the value of these one by one. You can give me this height. You can give me this height. Or even if you do not want to plot I and D, simply you can calculate bending moment under this 12. Okay, Abhishek, option B. Okay, yes, now it is correct. Good. Now it is correct. Very good. Whatever you have written 1180, that is for this maybe. So, but the right answer I remember it is 1187 only. Good, very good. इसलिए मैंने पहले कुछ नहीं बोला, मैंने बोला let's note it. Okay. So ये है सिनेरियो. अब ये सारे के सारे मेरे को अच्छा ये ऑर्डिनेट्स में हेल्प कर दो. ऑर्डिनेट्स में हेल्प कर दो. इफ इट इज 19.99 और चेक भी करते जाओ कि कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं कर रहा मैं अभिषेक. प्लीज स्टे विद मी बिकॉज यू हैव टू चेक. ओके, सो 19 पॉइंट चलो मैं करता हूं. आई एम राइटिंग हियर, यू प्लीज चेक.
Okay, so what is bending moment here? Here the bending moment is, it is 10 into 114.88 plus 12 into 17.43 plus 12 into 19.99 plus 16 into 17.54 plus 20 into 15.09. So I think if you are going to solve this, whatever you will get, so करता हूँ ध्यान से इसको, but answer 1187 is right. Let me check. So 16 into 17.54 आ गया, 17.54, just a minute. So 19.99 divided by 40, okay, 0.857 multiplied by 40.857 में से अगर आपने 5 हटा दिया 35.857, so it is okay, and like that. So it is coming around 1180. It is coming around 1180 kilonewton meter, isn't it? So this is what it is coming. Okay, under the 12 kilonewton, under the 12 kilonewton. So 10 into 14.88 plus 12 into 17.43 plus 12 into 19.99, and after that 16 into 17.54. Yeah, so it is this one. Okay, now let me solve it for second condition. So it is nearly coming out to be 1180. Okay, now the second condition is same. This time my load under consideration is going to be 16. So let me redraw this beam here. Let me redraw this beam here. Okay, so is it clear? Is it clear? So this if I am drawing here again,
then I'm placing it here. Again I have to take that you can say CG of the load system, or sorry, load system. So if this is my load system, but this time the value has to come between CG and 16. ओके, सो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मैं यहाँ लगाता हूँ. अब देखो लोड ऐसे ऐसे आएगा, एंड दिस टाइम द लोड अंडर कंसिडरेशन इज 16, सो सेंटर हैज टू बी मिडवे हियर ऑफ सीजी ऑफ द लोड सिस्टम एंड लोड अंडर कंसिडरेशन. सो इस बार आपने इसको लेना है कोने में, क्या बोलते हो, खोपचे में, 16 को. ये 16 हो गया आपका, ये 16 हो गया आपका. So what is this distance? This distance is how much? It is going to be 5 minus 1.714. So 5 minus 1.714 is how much? So total the distance between this G and this load under consideration is 3.286, and what is the half? Half thing is how much? It is 1.643. It is going to be 1.643. It is going to be 1.643. This half I am talking about, 1.643. So if this is 1.643, then what is going to be this distance? This distance is going to be equal to how much? This distance is going to be how much till load under consideration? It is 40 plus 1.643. So 41.643. 41.643. Tell me if it is clear or not. If it is 41.643, then what is the remaining? Then what is the remaining depth? Sorry, length. It is 80 minus 41.643. It is going to be how much? Okay, Abhishek, good. It is going to be 38.36. 30. दो डिजिट तक ही लिखते हैं यार. वैसे भी डेसिमल में क्या मतलब है जब सारे ऑप्शंस आपको इंटीजर में दे रखे हैं, दो तक लिखते हैं. सो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? इट इज 38.36. अब बना दो ILD अंडर दिस 16 किलो न्यूटन लोड. सो दिस ILD इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर 16 कितना आएगा? So 41.64 into 38.36 divided by 80. So it is going to be 19.97. Okay. This is like this. This is 12. Okay. Or this is also 12. And this is 10. Okay. तो इन सबको अगर मैं बनाता हूँ, इसका ऑर्डिनेट सिंगल ट्राइंगल से निकाल दीजिए. So this under 12 is 17.56. चेक करते जाना एक बार, बताना कि गलत है कि नहीं. 15.17 सिमिलर ट्राइंगल से सारे निकल आएंगे. 12.77 एंड सिमिलरली दिस वुड बी 19.97 और ये वाला हो जाएगा मेरा
let's say 17.36. Okay, so now if you are calculating the bending moment, it is equal to 10 into 12.77 plus 12 into 15.17 plus 12 into 17.56 plus 16 into 19.97 plus 20 into 17.36, and this is going to be 1187. Okay, 0.18, so but I'll keep it 1187 kilonewton meter. Okay, my dear friend, so this is the, whenever you are going to compare this 1180 and 1187, so this is going to be the maximum bending moment. This is going to be the maximum bending moment. Is it clear? Is it clear? Chaliye. So that is the case. So now the absolute maximum bending moment is going to be equal to 1187. So I would like to go with option number B, which is 100% correct. Option number B. I hope the concept I would have easily conveyed to you. Okay, but for detailed concept you can refer to my yesterday's special class, which I have taken on effect of rolling load on simply supported girdle. Is it clear to all my dear friends? Please let me know in case of any queries. So this is the last question. This was the last question. So I want to wrap up the session. Before that, if there is any query, then please let me know. So just I am displaying you the final answers for all the problem. एक बार सारे problems के लिए मैं आपको final answer दिखा देता हूँ, ठीक है? Just a minute. This was the question number 1. So it is Muller-Bisla principle. For this the final answer was 13. For question number 3 the final answer was 60 kilonewton, and for question number 4 it is 3L/8. 5 के लिए आया था ये 3/4 of its length, और 6 के लिए आया था 3 मीटर, 7th के लिए आया था 105.8 एंड 8th के लिए आया था 48 किलोन्यूटन, ठीक है। 9th के लिए इट वाज 240 आया था, 240 था, 8 या 24। 10th के लिए 150, ओके, एंड 11th के लिए 8 मीटर, एंड फाइनली इट इज 1187. इट वाज अ गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 वाज अ गुड क्वेश्चन. I hope you will get the concept now. So guys, that's all from today's session. I hope you like it. So tomorrow we will be resuming our geotechnical stuff. ठीक है, geotechnical morning session. आज ये slot free था, मेरा slot था सुबह 8:30 बजे से. So I thought कि मैंने ILD का session आप लोगों के लिए लूँ, so that it can benefit for you for a long run. Okay. So whenever you are thinking you want to revise ILD and you have studied it, then I am going to call it. It is going to be a good session for you. So just थोड़ा स्पीड बढ़ा के मैंने तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप लोग जल्दी से ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा. These questions will really help you guys in enhancing your concepts, I am quite sure. So guys, this is the complete package to crack GATE and ESE. You have seen I have already covered RCC structures, and now my geotechnical engineering, all these subjects are in English, is ongoing. This is the all batch for you can say GATE 2022. This batch we have started on 22nd of February, and Ascent batch is also there. It is targeting GATE 2023. This also we have started on 22nd of February. So you all can see that. Okay, thanks. Okay, welcome Abhishek. So it is the exclusive batch by our top educator. So let's simply watch this small video on this.
plan your subscription now. Okay, चलिए. और regarding the cost, for 1 year you have to pay 27,225, and for 1.5 month year it is 34,650. For 2 year it is 39,600. Okay, these are the cost of our plus plans. ठीक है. जनरली तो मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 साल या उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लो, उससे कम का कोई फ़ायदा नहीं है. बट नाउ इट इज़ ड्यू टू दी ESC कन्वेंशनल, ओके, ESC प्रीलिम्स और इन जुलाई, मैं बोल सकता हूँ कि फॉर द सेक ऑफ दैट जियो टेक्निकल जर्नल स्टडीज बैच, you can plan even our 3 month subscription and all. Okay, so all these are the prices here. You can see here all these are going to be the prices. And if we are talking about Iconic, तो Iconic के प्राइजेस थोड़े से दोस्तों ज़्यादा रहते हैं, थोड़े से हाइयर साइड पे रहते हैं. क्यों रहते हैं? 1 साल के लिए 45,225 एंड 2 ईयर के लिए 66,600, क्योंकि यहाँ पे हम आपको, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ यहाँ पे और बढ़ जाती है ना. आपकी प्रिपरेशन हमारी प्रिपरेशन बन जाती है, क्योंकि हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं एक पर्सनल कोच जो आपका लोकल गार्जियन की तरह होता है, जो आपके ऊपर पूरी देख रेख रखेगा, आपकी स्टडी प्लान करेगा, स्टडी बूस्टर सेशन से रखवाएगा. इज इट क्लियर? मतलब टेस्ट को एनालाइज करवाना, रोज डेली नोट्स भेजना, मॉनिटर करना कि भाई क्या कर रहे हो, कितना पढ़ लिया, क्या है, एंड ऑल दीज थिंग्स एसेस करना आपको. दिस इज गोइंग टू बी अ रियली बिग टास्क. इज इट क्लियर? सो दैट इज गोइंग टू बी द केस. सो गाइज यू कैन फॉलो मी एंड Unacademy. तो आप मुझे Unacademy पे फॉलो कर सकते हैं @sharma_1049, एंड दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल. मैं ये आज के 12 क्वेश्चन की PDF इसमें भेजने वाला हूँ अभी, और ये सारे स्टडी चैनल है जिससे मैं एसोसिएटेड हूँ, जिससे Unacademy एसोसिएटेड है. ये सारे रेवोल्यूशनरी चैनल है, ठीक है. एंड आई एम एसोसिएटेड विद Unacademy GATE CE जिसको आप वन स्टॉप सॉल्यूशन भी बोलते हो फॉर ऑल योर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम गाइस. So guys, thanks a lot. Thank you very much. Stay safe, be happy, and don't go outside if it is not required. Have a very nice day ahead. See you tomorrow. Bye.